comparison operators. There are various comparison operators available. For example, डबल इक्वल टू, आप इसे डबल, क्योंकि दो इक्वल के सिंबल है, यू कैन रीड इट एज डबल इक्वल टू. if if the value of the two operand is equal, then condition become true. What is the meaning of that? Okay, let me show you. For example, if you observe that mm, there is a one variable a, I would declare a equal to 5. Okay, another variable b, I would declare b equal to 6. Now if, for example, I have a two number a and b like this, and I want to compare that whether these two numbers are equal or not, then there is a symbol called double equal to, and technically we read it as assignment operator. Okay, we read it as uh, equal operator. Sorry, we read it as equal operator. Okay, so how equal operator work? Just a double equal to b. We are checking that क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के. ओके, पर हम वो बराबर कैसे चेक कर रहे हैं? डबल इक्वल टू के सिंबल का यूज करके. गेटिंग पॉइंट? सिंगल इक्वल इक्वल क्या काम करता है? सिंगल इक्वल काम करता है 5 जो वैल्यू है वो ए को प्रोवाइड करना. लैंग्वेज में अगर कंपैरिजन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल ए क्या बराबर है राइट हैंड साइड के वेरिएबल बी से, यानी दो वेरिएबल बराबर हैं कि नहीं है, दैट इज द लॉजिक एक्चुअली. सो वी कैन यूज डबल इक्वल टू ऑपरेटर, एंड इफ आई प्रेस एंटर, ओके, व्हाट द रिजल्ट आई गेट? फॉल्स. फॉल्स मीन बराबर नहीं है. आई विल गेट द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स. ट्रू मतलब बराबर है, फॉल्स मतलब वैल्यूज आर नॉट इक्वल. ओके, नाउ if I take for example another variable c, and c value is 5 for example, and I compare a equal to c. Okay, definitely c is 5, a is also 5. So if I compare a with c, I will get the result true. Okay, so this is the meaning of double equal to operator. We are comparing two number are equal or not with the help of double equal operator symbol. Okay.